आज की जो वीडियो बड़े मजे की होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन करेंगे द राइस ऑफ ढाका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल। मैं हूं जोयमानी और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इंटरटेनिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन करेंगे ढाका, द राइस ऑफ ढाका। वाई बांग्लादेश इज कैपिटल विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस। तो यार शॉर्ट में लिखा है ना, आपने रोटेट किया? एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप को रोटेशन हुई, आपको थोड़ा सा पढ़ने में इशू हो रहा था। हाँ। यही लिखा हुआ जो आपने पढ़ा है, ठीक है? हाँ, तो इतनी की बड़ी चीज नहीं लिखी है जितना डर गई हो यार। कहने का मतलब है कि दोबारा से रिपीट ना करना। नहीं, बस ठीक है, लोगों ने सुन लिया यार। आप लोग ना टाइटल में देख लेना क्या लिखा हुआ है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो मिलते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो पर। तो यार पहले वीडियो को शुरू करते हैं, बाद में चला बातें वगैरह करेंगे और मजे की गपशप भी लगाएंगे। तो पहले हेडफोन वगैरह लगा लेते हैं अपने कानों पर। डॉक्यूमेंट्री है, आई हैव नो आइडिया, पता कर लेंगे। चलिए यार वीडियो को शुरू फोन करके पता। This is Dhaka, the capital yes, city of Bangladesh, and it is one of the biggest cities ever in the entire world. It is even called a megacity considering how big it is. Several predictions have even concluded that Dhaka will be the world's largest metropolis by 2025, along with Tokyo, Shanghai, Beijing, Mexico City, and New York City. But what makes Dhaka stand out isn't how big, but how fast it grew and how important it's going to be toward the future. The country's capital is well known to be one of the fastest growing megacities. Its population more than tripled in the last 30 years, with 500,000 people migrating each year. This then turned Dhaka from a measly small city to Bangladesh's financial and commercial hub, accounting for 35% of the entire country's economy. This massive growth, however, is not all economically beautiful. A city like Dhaka becomes so big, so fast, it often comes with challenges. It resulted in a city with varying problems, but some of the direst ones pose a threat to the overall livability and social inclusivity of the city. Environmental pollution, intense congestion, and poor urban services are just some of the many more problems. If all of these are left unattended, these problems would just end up becoming larger and larger, and one day become a massive issue in the future. Thankfully, however, these are being met with solutions. The biggest solution the government has initiated is the construction of infrastructure. It has always been known that the capital has been laggard in infrastructure developments. It was a major constraint to the very growth of Bangladesh. According to experts, the country's infrastructure global ranking from 2016 to 2020 stood only at a rating of 2.3 out of 10, which makes it one of the lowest in the world. But in the next 5 years, from 2021 to 2025, the ratings are expected to jump to 4.5 out of 10. These infrastructures will push the capital into becoming a world-class city, which will become a place filled with innovation and futuristic technology. Some of the biggest initiatives fueling the economy of the capital are in the transportation sector. As the capital continues to grow, transporting tens of millions of people every day becomes essential. If left alone, it will become one of the biggest bottlenecks to the economy, as traffic congestion are notorious for destroying economic activity. The biggest transportation master plan fighting these issues is the Dhaka-Chittagong High-Speed Railway, a 220-kilometer project that is expected to be one of the country's biggest plans ever in its history. It will carry at least 50,000 passengers daily and is expected to be finished by 2030. Furthermore, the cost of the project stands at a whopping $11.4 billion US. The expansion of its international airport has also reached a major milestone. The Hazrat Shahjalan International Airport will be constructing a third terminal, which will cost $2.5 billion. These costs will help push the airport's passenger handling capacity rate to over 20 million annually from just 8 million, making it one of the few big initiatives to help alleviate the congestions the capital is facing. As the economy grows further, the middle class of the capital grows as well, and demand for flights become the new norm for the people. Several more infrastructures are on the way, too much to mention in one video at least. In summary, the other bigger plans are the Dhaka Metro Rail, Dhaka Subway, and even energy power plants.
These infrastructures will be the backbone of the rapid growth in the country. As it turns into a more transit-oriented place, the compact, connectedness, and resilience of the city and its people would further increase and result in much higher productivity rate and economic output, which then ends up resulting in further improvements to other types of endeavors. As long as they do their part in transforming the city and its infrastructure, continuously combining different kinds of investments, then one day we will see Dhaka becoming a world-class economic major hub. Anyway, what do you think about Dhaka? Let us know your thoughts in the comment section below. Don't forget to leave a like and subscribe for more. जी तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैंने इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री जो है ना ढाका की पहले कभी भी नहीं देखी जितना उन्होंने बताई है यार। स्पेशली मतलब ढाका इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इस तरह की आपने वो ट्रेन के बारे में देखा था कि अपग्रेड आने वाली है, वो अंडरग्राउंड होगी और रॉकेट बुलेट ट्रेन होगी यार। मतलब जैसा कि जापान में चलती है और टोक्यो आई थिंक जापान ही है ना, और चाइना में चलती है शंघाई में, तो यार उस तरह की ट्रेन जो है वो ढाका में आने वाली है। और यार ढाका की तो मैं कहता हूँ जीडीपी, ढाका की सिटीज़, ढाका की डेवलपमेंट, ढाका की इकोनॉमी मतलब इतनी जल्दी ऊपर गई है और इतनी जल्दी से डेवलप हुआ है ये सिटी और इतना बड़ा हब बन चुका है यार। मतलब कोई जज भी नहीं कर सकता था कि यार ढाका किसी दिनों में इतना ऊपर चला जाएगा यार। सही बात है, हमें बहुत अच्छा लगा इसके ऊपर रिव्यू देकर और एक्शन कर। तो आप बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। कमेंट सेक्शन खाली है, जितनी मोहब्बत जितना प्यार। अब इस दफ़ा मैंने कमेंट बोला, ठीक है, कमेंट नहीं बोला, ठीक है, वो तो आप एक वो करें, फन करें, ठीक है। जो और बाकी जो हमारे पंजाब से है कमेंट सेक्शन में दस देना कि थानू किस तरह लग गया। जी बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और मजा आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इस तरह की मतलब हमारा प्यार आप लोगों से बढ़ता रहे यार। और स्पेशली बांग्लादेश की जो सिटी है चिटिंगोंग ढाका बहुत ही औसम है। और जिन लोगों ने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखें। ढाका पे हमने पहले भी रिएक्शंस किया हुआ है, ढाका कलकत्ता के साथ भी हमने कंपैरिजन किया हुआ है, ढाका का मुंबई के साथ भी कंपैरिजन किया हुआ है, ढाका सिटी के ऊपर भी हमने एक रिएक्शन किया हुआ है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हैं, जाके पहले चैनल में जाकर वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो पर आए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम लोगों को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।